Hello everyone. Today we will discuss about indifference curve. What is indifference curve and who are associated economists with the indifference curve. So let's start with the associated economics. Firstly, it was F.Y. Edworth. Next, E.E. Slutsky. Next, J.R. Hicks. Next, R.G.D. Allen. All these economists are related to the indifference curve. Next, we have a definition of indifference curve. Indifference curve show the various combination of two goods that provide the same level of satisfaction to a consumer. इंडिफरेंस कर्व हमारा बेसिकली क्या शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड दैट प्रोवाइड अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर दैट मीन अगर आप दो गुड्स का कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल ड्राइव होने वाला है वो आपको सेम मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या रहेगी? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड द रीज़न इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. दैट मीन्स अगर आप किसी एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं तो आपको वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा अगर आप वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं तो आपको एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. Here we have a formula that is marginal rate of substitution of x and y commodity is equal to marginal utility of x upon marginal utility of y. It represents how much of a good a consumer Y is willing to give up to obtain one more unit of good X. That mean एक X कमोडिटी की ज़्यादा गुड को कंज्यूम करने के लिए Y कमोडिटी की कंजम्पशन को एक कंज्यूमर कैसे डिक्रीज़ कर रहा है बिकॉज ही गॉट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. Here we have an indifference curve. It is very clear that indifference curve is concave to the point of origin and it is downward sloping, and it was already clear that indifference curve is downward sloping because of marginal rate of substitution. Then we have an indifference map. Indifference map is nothing but a group of indifference curve is known as indifference map. A set of indifference curve representing different level of satisfaction is indifference map. A group of indifference curve is also known as indifference map. Next, we have a features of indifference curve. What are the features of indifference curve? Firstly, it is downward sloping. जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग है एंड द रीज़न इज़ वेरी क्लियर इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नेक्स्ट, convex to the point of origin, it is convex to the point of origin because of diminishing marginal rate of substitution. Next, it would never intersect each other. That means आप दो कमोडिटी की कंजम्पशन को जब एक साथ देखते हैं तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता. नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा दैट मीन्स वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा है. यूटिलिटी इज़ नथिंग बट अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट, डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन ड्राइव ना हो, इसलिए किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता. मे नॉट बी पैरेलल. इंडिफरेंस कर्व कभी पैरेलल नहीं होता है. नेक्स्ट, स्पेशल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्टली कॉन्वेक्स. It is convex to the point of origin because of normal shape due to diminishing marginal rate of substitution. Next, concave. Indifference curve is concave because of increasing marginal rate of substitution. And indifference curve is straight line if marginal rate of substitution is constant. And its other name is iso-utility curve, equal satisfaction curve, and the isoquant curve. So it is very clear that indifference curve is convex to the point of origin, and the reason is that it is because of marginal rate of substitution. And indifference curve show that how the two different commodity can provide a same level of satisfaction.
If you want to consume a one more commodity, then you have to sacrifice the other commodity. Thank you.